प्लीज आप लोग और भी पार्टिसिपेट कीजिए। मैं जानती हूँ सभी के अंदर जो है बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब है, सभी बहुत कुछ जानते हैं जिससे सबको बेनिफिट मिल सकता है। प्लीज। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं सुन रहा था, थोड़ी देर मैंने वीडियो भी बंद रखी, ऑडियो भी बंद रखी, मैं सुन रहा था आपकी डिस्कशंस को। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस, और लग रहा था कि टीचर दिल से बोल रहे हैं। और वाकई ही देखिए, ये जो रिफ्रेशर कोर्सेज हैं या जो भी इस तरह के इवेंट्स हैं, इनके पीछे पर्पस ही ये है कि वी ऑल सिट टुगेदर, वी हैव ओपन डिस्कशंस, राइट? We have open discussions and we try to find out the solutions, then creating the problems, then understanding the problems. अब एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जो पुराना ढर्रा था, जिस तरह से हम चले आ रहे थे, राइट, वो सिस्टम इवॉल्व हुआ था एक हालात के तहत। हम ये नहीं कहते कि वो गलत था, पर ठीक है, वो एक सिस्टम था, राइट। अब वक्त आगे बहुत बढ़ गया है और हमारे सिस्टम में कुछ हद तक इनर्शिया आ गया था। उस इनर्शिया को अब तोड़ने की जरूरत तो है, राइट, तोड़ने की जरूरत तो है। और जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो इस तरह की चीजें, इस तरह की डिस्कशंस, इस तरह की बातें बड़ी स्वाभाविक हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि आज के टीचर्स क्वेश्चन कर रहे हैं इन बातों को, राइट, कि भैया व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल दैट यू वांट अस टू प्ले। आप हमसे करवाते तो टीचिंग हो, हमारी 16 घंटे की वर्कलोड को गिनते हो कि 16 घंटे इसने क्लास ली कि नहीं ली, राइट। और उसके बाद जब हमारे को प्रमोशन देने का वक्त आता है तो फिर आप एपीआई लेके आ जाते हो, और एपीआई में आप हमारे उन पैरामीटर्स की चेकिंग करते हो जो हमारा प्राइम काम नहीं है। हम कितनी कमेटीज में गए, हम कितने सेमिनारों में बोले, हमने कितने आर्टिकल लिखे, ये सब की इवैल्यूएशन होती है। जबकि हमारी ये इवैल्यूएशन होती ही नहीं कि हमने कोई नई टीचिंग मेथड कोई अपनाया हो, कोई नए तरीके से पढ़ाना सीखा हो, कोई नया सब्जेक्ट लॉन्च किया हो सकता है कि अब कोई नए सब्जेक्ट्स ही क्रिएट हो गए हो, पुराने सब्जेक्ट्स की जरूरत ही ना रही हो, राइट। तो इन चीजों के ऊपर डिस्कशन होनी बड़ी जरूरी है। और मोनिका ने बड़ी सही बात कही कि कैंडिडेट तो एक पीएचडी कर रहा होता है, और जब आप गाइड बन जाते हो, मोनिका आप शायद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपके पास 3 ही कैंडिडेट हैं, हमारा क्या होगा, हमारे पास तो 8 कैंडिडेट्स होते हैं, और एक टाइम पे हम 8 कैंडिडेट्स को पीएचडी करवा रहे होते हैं। मान लीजिए कि आप 8 पीएचडी एक टाइम पे कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हो, बट एक चीज जरूर इससे होके आने वाली है कि बदलाव तो पक्का आएगा, राइट, चेंज तो पक्का आएगा। और यही पर्पस है शायद इस पूरे के पूरे सेमिनार का। तो शिफारी मैडम हैं बीच में या नहीं है? हेलो, नमस्कार सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। जी जी जी, तो आप गॉट डिस्कनेक्टेड। आप आ जा रहे हो इसमें मीटिंग में, तो चलिए अब आप इंट्रोड्यूस वगैरह कर दीजिए ताकि हम भी अपनी बात कहें। मैंने तो खुद ही एंट्री मार ली थी जब सब बातें कर रहे थे, ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी मच। तो मैंने तो खुद ही एंट्री मार ली थी जब सन्नाटा हो गया, चुप कर गए सब लोग, मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही बोलता हूँ फिर। जी नमस्कार। एक्चुअली मैं बोल तो रही थी बीच में, पर मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं आ रही थी। जब आप आए तो मैंने आपका स्वागत किया, पर कनेक्टेड तो थी, पर वो नेटवर्क इशू आ रहा था तो आप लोगों को आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। पर एचआरडीसी में नेटवर्क इशू तो आना नहीं चाहिए ना, अगर एचआरडीसी में नेटवर्क इशू है। हमारी पूरी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क जो है वो इंटरनेट पिछले 15 दिन से नहीं चल रहा है। पूरी वर्कशॉप मैंने अपने फोन पे निकाली है ऑफिस में, और पहले आते हैं कोई जुगाड़ बनाते हैं फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। एनी हाउ सर, ये तो धीरे धीरे सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम।
जी हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही अच्छे व्यक्ति और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से HOD प्रोफेसर तेजिंदर शर्मा जी का, और बहुत ही अच्छे मित्र, और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे बहुत अच्छे से इन्होंने निर्वाह किया है। NSS के भी रहे, यूथ वेलफेयर के भी आप डायरेक्टर रहे, और बहुत सारे जो काम है बहुत सारी कमेटीज में जो कि आप जुड़े हुए हैं, बहुत फ्रीक्वेंट मूव्स हैं आपकी टुवर्ड्स द वेरियस यूनिवर्सिटीज, और बहुत सारा कंट्रीब्यूट areas of review literature in connection with the questionnaire, उसके हम सभी प्रतिभागियों की ओर से सर, अपनी ओर से और मानव संसाधन विकास केंद्र भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इनके साथ, इनकी एनर्जी के साथ आप फ्लो जब करेंगे तो आप लोगों को ये सेशन बहुत ही लाइवली और हल्का और मजेदार लगेगा। तो हम धन्यवाद करते हैं सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे मानव संसाधन विकास केंद्र में अपना समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ओवर टू यू। चलिए, थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, राइट। और बस वो मुझे कहीं जाना था, जहाँ गए नहीं आज बंद की वजह से, तो अभी वहाँ के लोगों के खूब फोन आ रहे हैं बीच बीच में, सेइंग कहाँ पहुंचे। बट हमारे देश में वाकई आप बातें जो कर रहे थे, हालात इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि वी रियली डू नॉट नो व्हाट वेयर वी आर हेडिंग टू, राइट। So we really need to build a different India. We really need to build a new India, and we really do think very, very seriously on which direction we are going. Anyway, thank you, Shefali Madam, for your kind invitation. And I'm extremely, extremely happy to be a part of this event in which you see you are talking about research, you're talking about, say, the newer methods of doing research. देखिए, आने वाला वक्त जो है, that is going to be the age of data, right? And we all know that we all are contributing towards big data every moment, right? We all are contributing towards big data every moment. और एक ऑथर ने, अभी कल ही मैं न्यूज़ सुन रहा था, एक ऑथर ने लिखा है कि आने वाले टाइम का शायद जो भगवान होगा वो डेटा होगा, राइट? और आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है कि जिसमें टेक्नोलॉजी और डेटा और ह्यूमन बीइंग्स ये सब कनेक्टेड होंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल इंटेलिजेंस में कोई भेद नहीं रहेगा, राइट। हम भी अपने सोच से ही वो काम कर पाएंगे। मैं सोचूंगा दरवाजा खुल जाए तो दरवाजा खुल जाएगा, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, एंड लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स, राइट। Now you see, we may not probably need our traditional methods of data collection, traditional ways in which we all are having our approach towards research, irrespective of what subject we are teaching, right? We are heading towards newer dynamics, and the reason behind newer dynamics is we have got tons and tons of data. In the earlier times, the research was following the, say, deductive approach, in which you would look at a couple of things in bits and pieces, and then you would deduce and you would reach out to the conclusions. You would join those bits of pieces and then you would reach out to the conclusions. अब वो उसको आइजैक न्यूटन को पेड़ से सेब गिरता हुआ दिखा, and then he probably rolled his mind back into developing the theory of say gravity, right? Probably, now we are having a reverse situation wherein we have got so much of data on the phenomenon, on the facts, every time, every moment, everywhere. For every field, we are collecting so much of data, right? And this data is in the digital form. So all our earlier methods of data collection, all our earlier methods of data analysis, they are going to go have a very big change.
We have got very strong mathematical algorithms now. We have got very strong mathematical calculations now, wherein we are able to draw conclusions. We are able to draw the relationships between the, say, numbers which we are collecting from the external phenomenon, and these relationships are helping us to draw conclusions, right? Relationships are helping us to draw the conclusions. So this is what is a new research that is going to come in the days to come, right? So probably our present methods of research methodology, they really need to be relearned. We need to unlearn our old knowledge, learn new knowledge, and then again relearn that newer knowledge and apply into the newer settings. So with this small background, I'm extremely thankful to your kind invitation. Madam, this is a 1 week program or 2 weeks program? This is a 1 week program, sir. Acha ji, right. We will be winding up tomorrow on research methodology. Tomorrow. Research methodology, right. So बुलाया उस टॉपिक के लिए जो सबसे पहले होना चाहिए था, बुलाया आपने सबसे लास्ट में है, राइट? आपने सब समय लिया. Right. So let me start my presentation. जैसे हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हाइपोथेसिस, आर मेथड, केस स्टडी मेथड्स, इसके ऊपर हमने बात करी है सर. ठीक है जी, उसको मैं ज्यादा नहीं टच करने वाला, बट बिल्कुल सही बात है. आपने जो बात करी है वो ये है कि दो दोस्त थे, टॉम एंड जेरी. अब संता बंता के जोक्स तो बैन कर दिए ना सरकार ने, तो इसलिए टॉम एंड जेरी की बात कर रहे हैं. दोनों पीएचडी कर रहे थे, तो दे से आस्क्ड ईच अदर कि हाउ इज योर थीसिस वर्क गोइंग, राइट? टॉम आस्क्ड जेरी. जेरी सेड इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बट ओनली 1 चैप्टर इज लेफ्ट. तो टॉम कहता है व्हिच वन? तो जेरी कहता है लिटरेचर रिव्यू, right? Incidentally, we are looking at literature from this perspective as if it's a gravy. It is used to increase the number of pages, and probably, we just need to report the literature. Whereas research is something which is a mix of the Pathan, and Chintan, right? Research is a mix of Pathan, and Chintan. You see, I don't know how far this analogy is true, but I had read it somewhere that to speak 100 words, you need to think 1000 words, right? To speak 100 words, you need to think 1000 words, and to think 1000 words, you need to read 10,000 words. This is the importance of literature. This is the importance of, say, referring to the previous research. This is the importance of understanding the theory behind the topic which we all are researching on. So literature is something which, although you have talked, but it is something which is most difficult. हमारे यहाँ पे पीएचडी का कोर्स वर्क कितने टाइम का होता है? हेलो, 6 months, sir. 6 months. 6 months. 6 months का. जी. उसके बाद फिर सिनॉप्सिस बनाने में कितना टाइम देते हैं हम स्कॉलर को? About 6 months, sir. 3 से 4 महीने. 3-4 महीने देते हो आप? Yes, तो नहीं देते? हाँ जी सर, इतना तो लग ही जाता है. अच्छा जी. तो 3 महीने में रफली स्कॉलर कितने रिव्यूज पढ़ के आता है? लेके आता होगा सिनॉप्सिस, ड्राफ्ट सिनॉप्सिस. कितने पढ़ के लाता है? एनी आइडिया? आप सबके पास भी? हाँ जी, 60-70 roughly. 60-70. Impossible. hardly 60-70 would be too much, I guess. 30 to 35. 30 to 35. Again, a little difficult figure. देखिए, frankly, if you want to read a good paper, right, it is almost very difficult to read one good paper in one day.
and particularly if it's a good research paper, right, you need some time to read it. And particularly when you are at the beginning of the research, reading a research paper itself is a very big issue. So once you have read the research paper, then you have to build a big picture. Literature review is something like कि आपको अंधेरे कमरे में आंखों पे पट्टी बांध के छोड़ दिया हो और ये कहा हो कि इसके अंदर हीरे पड़े हैं, उसे ढूंढो, राइट? और आपको छोटे छोटे क्लूज दिए हुए हैं, and on the basis of the clues we have to build a big picture. So our scholars devote very less time for the review of literature. Usually, you know, they spend, okay, I go by your word, 3 months for developing a synopsis. Then after that, you know, when they are actually working on this, they find, oh my God, we have entered into a trouble. Why? Because we did not refer to the literature at the right time. And today we are finding it difficult to build the big picture. They find difficulty in making their questionnaires. They find difficulty in doing the data analysis. And then after that, they find the difficulty in getting their research work published in good academic journals, right? Why this happens? This happens probably because we spend very little time in the, say, understanding of theory. और ये जो 25-30 आर्टिकल आपने अभी बोले, इसमें भी वो किताब नहीं पढ़ता, वो सिर्फ गूगल स्कॉलर से आर्टिकल्स ढूंढ के उनको पढ़ के आता है या आती है. Am I right? Yes or no? Yes, sir. Hello. देखिए Yes, sir. Google Scholar has kind of replaced reading books nowadays. Yes. So nobody yes, wants to read books. Everybody wants to go to Google Scholar and read it from there. जी मैडम देखिए, हम सब ना एक ही बोट में तैरने वाले हैं, हम सब एक ही जैसे यूनिवर्सिटीज में हैं, राइट? हम सब एक ही जैसे इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं. तो इसलिए मैं ओपन बातें कर रहा हूं आपके साथ. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ आइडियल्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द रियलिटी, राइट? That what is actually happening. Ideals तो ठीक है, it is good to talk on coffee table, but then if we have to improve the system, we have to really dig out where the problem lies, where the shoe pinches, and that is why I am talking of all these. ये मैं structured presentation के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, right? That is why, because my purpose is, please don't make it a monologue, please make it a dialogue. मैं भी यहाँ से आपसे कुछ ideas लेने ही आया हूँ मैं, right? मैं भी आपसे यहाँ से कुछ सीखने ही आया हूँ मैं. तो प्लीज कीप ऑन इंटरेक्टिंग एंड टॉकिंग and say responding whenever I am asking something. So you see, our scholars, why I am saying scholars again and again, because after all, you know, for any PhD or any research output of any college or university, they are the ones who are actually the ground soldiers. They are the ones who are the real Agniveers. They are the ones who actually work on, and they produce the kind of the research inputs which we all shape. Okay, so we really need to tell them that, students, first of all, you start and you read the book once again, and within the book also read the theories which probably they very conveniently skip. So once they have read the theories, only then they should start building on the literature which is based on the theory, and then identify the research gaps. अब हमारे तो सीधा सीधा आजकल ट्रेंड बन गया है कि सैम का मॉडल बनाना है जी. तो सैम का मॉडल बनाने के लिए 5-6 पुराने मॉडल लिए, उसमें 2 वेरिएबल, सर उसने ये किया, उसने ये किया, ये नहीं किया, तो चलो ठीक है, इसका स्टैंडर्ड मिल जाएगा मुझे, यहाँ से उठाओ, एंड देन वी आर एबल टू डू इट, राइट? दैट इज व्हाई, यू नो, दिस इज द टाइप ऑफ द आउटपुट व्हिच वी आर प्रोड्यूसिंग. तो अभी जो बात कर रहे थे, एक सर कह रहे थे कि जी ये जो रिसर्च है ये सिर्फ हम पब्लिकेशन के लिए ला रहे हैं, इट इज नॉट रियली मेकिंग अ रियल इम्पैक्ट इन आवर लाइव्स. इट इज दिस रीजन दैट दिस रिसर्च इज नॉट मेकिंग एनी रियल इम्पैक्ट इन आवर लाइफ. डू यू एग्री? हेलो? Yes, sir. Yes, sir, agree. जी, तो इसका सोल्यूशन भी बताओ मुझे फिर. देखिए, प्रॉब्लम की तो हमने बात कर ली, इसका सोल्यूशन भी बताओ मुझे कि इसको सॉल्व कैसे करें. इसको सॉल्व किसने करना है? कोई दूर से नहीं आने वाला. और बिलीव मी, शिफाली मैडम कह रहे थे जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है जी, ये वो. तो मैडम ये तो ऐसे ही रहना है, ये ऐसे ही रहना है सिचुएशन. मान के चलो कि ऐसे ही रहना है, कभी भी अनलिमिटेड फंडिंग नहीं आने वाली. ये तो एक बार लोन वाला शगुफा छोड़ के इन्होंने बता दिया कि देखो हम ये भी कर सकते हैं, राइट? बट
प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहने वाली है, अनलिमिटेड फंडिंग नहीं आने वाली। हमें अगर कोई भी रिसर्च आउटपुट क्रिएट करना है तो इट हैज टू बी द वन व्हिच हैज टू बी डिपेंडिंग अपॉन आवर क्यूरियोसिटी, राइट? एंड व्हेन यू आर क्यूरियस, व्हेन यू आर मोटिवेटेड, व्हेन यू आर डिटरमिन्ड, then you really do something and you make an impact, right? आप बदलाव ले भी आते हो। तो इसका सोल्यूशन बताइए कि ये रिसर्च को प्रैक्टिकल कैसे करें, बताइए जी। अब आप सब लोग अपना अपना इनपुट दीजिए। Yes, how we can really make the research meaningful, how we can make the research practical so that it brings about a real change. Yes, मैं पीपीटी स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद दोबारा पीपीटी क्वेश्चनर डिजाइन वाली पे बात करेंगे जी। यस, प्लीज टेल मी योर आइडियाज, योर थॉट्स, योर इनपुट्स। So I believe it should start from the primary level. Whenever somebody is trying to, start doing research, suppose in the graduate classes. So I teach a paper on research methodology, but because the children don't know anything about it, so if there is a mentor who can actually tell them the importance of research and can give them certain practical things that they can do, जैसे आप बात कर ही रहे हैं कि कैसे, मतलब how it is important और कैसे वो करे, उसके लिए पहले तो टीचर को खुद एजुकेटेड होना पड़ेगा। बिकॉज लाइक यू आर सेइंग कि हम लोग सब गूगल स्कॉलर पे ही जाते हैं या कैसे करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो मुझे लगता है कि आपके जो स्टूडेंट्स होंगे उनका भी इंटरेस्ट होगा। और जब वो इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि अगर 50 की क्लास में से 5 स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड और वो अपने इंटरेस्ट से काम करेंगे, तो देन दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस गुड वर्क। दैट इज व्हाट इज माय व्यू पॉइंट। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपने कहा अक्षरशः सही है। रियल आउटपुट विल कम ओनली व्हेन वी विल हैव रियली मोटिवेटेड टीचर्स, राइट? एंड रियली मोटिवेटेड टीचर्स विल बी द वंस हु विल थिंक बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ देयर क्लासरूम। ठीक है जी। देखिए, हमने सबने क्या सोच लिया कि अगर रिसर्च का कोई भी आइडिया लेना है तो दैट आइडिया हैज टू कम फ्रॉम आइदर द बुक और द लिटरेचर। एम आई राइट? Either the book or the literature. Yes, sir. When we are telling the student to formulate the research problem, can we have some newer practical methods by which a student can go and formulate the research problem? Can we really relearn how to write a synopsis? Yes. Please, everybody give your ideas. Sushma, Daya, Pushp, Deep, Dang, Shimmy, Chauhan, Ritika, Bhardwaj, I am reading the names. Please. सर, इसके लिए एक ये हो सकता है कि जितना भी हम अपना रिसर्च को, जैसे क्लासरूम की बात की चित्रा जी ने, हम बच्चों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो उनकी डेली लाइफ के अंदर रूटीन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ कनेक्ट करते हुए, एक्सीलेंट, वंडरफुल, उसके साथ बात करके आइडिया जनरेट करें कि भाई व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। आप जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा इश्यू ले सकते हैं, एक छोटा सा कॉमन इश्यू के ऊपर भी बात करें छोटे लेवल से। तभी चलो पुष्प जी, ऐसा है कोई मुझे आप कौन सा, आप क्या पढ़ाते हैं पहले ये बताइए? कॉमर्स सर। कॉमर्स कहाँ पे पढ़ाते हैं? गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन रोहतक जी। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, राइट? थोड़ा हम सब एक दूसरे को जान तो जाएं ऑनलाइन। अब देखिए सिर्फ एक सामने स्क्रीन है और मैं बातें कर रहा हूं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिएगा। तो पुष्प जी, मुझे ये बताइए कि अपने बच्चों में जो प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करवाएं, कैसे उन्हें क्लास से बाहर लेके जाएं, कहां से उसको, थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल बताइए अब। और सभी पुष्प जी की मदद करिए, पुष्प जी को हेल्प करिए कि भाई कैसे हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं क्या? सब लोग कॉमर्स के टीचर्स हैं इसमें? नहीं, we are a mix, right? Chitra, you are from which subject? So I teach journalism and mass communication at Government College, Panchkula. So you are the ones who are actually setting the agenda, agenda setting theory. I really got enamored by that. Yes, it's a wonderful theory. It's a wonderful theory. जी पुष्प जी, आपको समय दिया अभी सोचने का, तो बताइए कि हम अपने बच्चों को कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सिखाएं। सर, जैसे बीइंग ए कॉमर्स टीचर या कॉमर्स स्टूडेंट्स,
मैं बच्चों से जनरली जैसे इनकम टैक्स हमारा एक बर्निंग इश्यू रहता है, इनकम टैक्स के बारे में बच्चों की भी एक बेसिक प्रॉब्लम है आज के टाइम पे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, क्योंकि बच्चे की फाइनल ईयर में आते ही ये जिज्ञासा हो जाती है कि किसी न किसी तरीके से मुझे अपनी जॉब के लिए जाना है, तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई आप रिटर्न फाइल करना, ये एक बेसिक चीज है, इसको सीखे। तो उसके सीखने से सबसे पहला आता है कि सर हाउ कैन वी फाइल द रिटर्न, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर कहते हैं, बेटा आप एक बार खुद लॉग इन कीजिए। मेजॉरिटी आज के टाइम पर लगभग हर बच्चे ने अपना पैन कार्ड बनवाया हुआ है, उसे रजिस्टर्ड करें, प्रैक्टिस करें, जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सुने और उनके डिस्कशन के साथ अगर आप एक बार प्रैक्टिकल रिटर्न फाइल करना सीख गए, एक गुड अर्निंग आपको मिल सकती है। इवन इनकम टैक्स ने भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के रूप में कुछ पेमेंट गवर्नमेंट से भी मिलती है और आप प्राइवेट काम भी कमा सकते हैं, तो इसके लिए भी आपका एक एक्सपोजर है, इस फील्ड में आप काम करें। जीएसटी आने वाले टाइम में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने, देखिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना, ये स्किल है, राइट? ऑल दीज आर स्किल्स व्हिच एवरी स्टूडेंट मस्ट नो। विदाउट नोइंग द स्किल्स, अब ये मान लीजिए जर्नलिज्म से है चित्रा, और अगर बच्चा प्रेस रिलीज नहीं लिख सकता, राइट, अगर उसे मान लीजिए कहीं किसी रैली में भेज दिया जाए और उसे कहा जाए कि प्रेस रिलीज लिखो, और वो बच्चा नहीं लिख पा रहा, उसे पता नहीं चल रहा कि लीड किसको बनाना है मुझे, राइट, उसकी पोजीशनिंग कैसे करनी है, तो आई थिंक ये तो बेसिक स्किल्स हैं। हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, राइट? रिसर्च स्किल से एक स्टेप आगे है, राइट? स्किल तो सिर्फ एक काम हो रहा है, उस काम को अच्छे से करने का तरीका है, राइट? तो भाई चलिए रिटर्न फाइल करनी है और उसको सिखा रहे हैं हम, स्किल है। बट रिसर्च इज के रिटर्न में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? यस। So I think experiential learning would help in this. Suppose majority of researchers that you can see in media is related to certain kind of impact of one or the other medium. तो जैसे देख रहे थे एक मेरी क्लास का ही जैसे एग्जांपल व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इट, सो देयर वाज दिस स्टूडेंट, ही वाज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड विद सोशल मीडिया, मतलब पूरा दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, यही सब। तो उसके क्लास के ही बच्चों ने आइडेंटिफाई किया कि ये काफी देर उसी पे रहता है, इसलिए ये थोड़ा इंट्रोवर्ट हो गया है ना। जब हम लोग कोई पार्टी करते हैं या कैंटीन में जाते हैं तो ही इज द वन हु इज अलूफ। तो मतलब ये एक चीज उन्होंने आइडेंटिफाई की कि एक ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है सोशल मीडिया का कि जो लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब ज्यादा मिंगल नहीं करते हैं लोगों के साथ। तो उनको ये चीज आइडेंटिफाई करना सिखाना कि आपके आसपास किसी पर्टिकुलर मीडियम की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में अगर वो लोग इफ दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट दिस, सिमिलरली मतलब कहीं पे भी वो बाहर जाते हैं, जिस भी एरिया में वो रहते हैं, अगर वहाँ उन्होंने आइडेंटिफाई किया कोई प्रॉब्लम, से कोई वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, तो उस पे मे बी दे कैन टॉक टू पीपल एंड कम आउट विद सॉल्यूशंस। तो उनमें ये जो आइडेंटिफाई करने की प्रॉब्लम को जैसे आप बात कर रहे हैं, वो दैट इज एक्चुअली रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन प्रैक्टिकल सेंसेस, कि उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, दैट इज अ काइंड ऑफ लिटरेचर रिव्यू, एंड देन दे कम अप विद अ रिसर्च प्रॉब्लम कि क्या मतलब प्रॉब्लम है और उनका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। थैंक यू सर। एब्सोल्युटली वंडरफुल, इनपुट्स, राइट? अब चित्रा मैडम, एक सिंपल सी बात है, आज देखिए बंद की बात चल रही है, हाँ, एक आपके केस स्टडी लेते हैं, राइट? बंद की बात चल रही है। अब ये जो स्कीम निकाली अग्निवीर वाली, ये सरकार ने सोच समझ के निकाली होगी, जो कुछ भी है, राइट? हम उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट ये जो इशू उठ रहा है, क्या ये जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी नहीं है? ऑफ कोर्स ये कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है कि एक फॉर्मल मीडिया के थ्रू बात हो रही है, कि इनफॉर्मल मीडिया के थ्रू, और सोशल मीडिया ने एक नई ही इमेज बना दी है इस पूरी स्कीम के बारे में। Am I right? जी सर, बिल्कुल। तो कैन वी आइडेंटिफाई ये प्रॉब्लम, राइट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव? अब देखिए ये जो अग्निपथ वाला जो चल रहा है, इसी को क्लू पकड़ते हैं, राइट? वी ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। हमारे पुष्प जी कॉमर्स से हैं, यू आर फ्रॉम जर्नलिज्म। अभी भी एक दो लोगों ने वीडियो ऑन किया था। मीनाक्षी मैडम, आप कौन से फील्ड से हैं? सर मैं फिजिकल एजुकेशन से। वंडरफुल, एक्सीलेंट, फिजिकल एजुकेशन से। चलिए ये भी रिलेटेड फील्ड ही निकल आया। आप अग्निवीर पे ही बात करके देखेंगे, राइट? सभी का पर्सपेक्टिव लेंगे हम।
प्लीज स्कीम के बारे में बात नहीं करनी हमने कि भी हमने ये अच्छी है बुरी है, पॉलिटिसाइज नहीं हमने करना है इसको। हम तो ओपन स्टूडेंट्स हैं यार, यहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च कर रहे हैं कि हाउ वी कैन रियली से रीच टू अ सिचुएशन वेयर एनीथिंग दैट इज से इंट्रोड्यूस्ड दैट इज being taken in the right perspective by the say public. Okay, so what problem do you visualize as a result of these events which we are observing around us today? Yes, we can have inputs from everybody. आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से inputs दे सकते। Yes, मीनाक्षी मैडम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एस्पेक्ट है जिसपे रिसर्च हो सकती है, या क्या एस्पेक्ट है जिसपे स्टूडेंट्स को कहा जा सकता है कि यू कलेक्ट डेटा एंड यू वर्क ऑन दिस? हेलो, आई थिंक गवर्नमेंट ने देखो कुछ ना कुछ सोच समझ के निकाला है, तो अभी हम इनकी ड्रॉबैक्स तो बता ही नहीं सकते। ये एक रिसर्च का ही विषय है कि अच्छा रहेगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, नेगेटिव आएगा। नहीं, फिजिकल एजुकेशन, देखो फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि जो मीडियन एज थी प्रेजेंटली आर्मी की वो हायर थी, राइट? अब हमें अगर मान लीजिए पहाड़ पे चढ़वाना है, तो उसके ऊपर कोई मान लीजिए अपनी सोल्जर्स को भेजना है, और हमारे साथी तो सारे हमारे बॉर्डर्स इतने मुश्किल बॉर्डर्स हैं, राइट? वहां पे पहुंचना, तो फिजिकल एज तो घटनी चाहिए ना सभी की, और उसके लिए फिजिकल कैपेबिलिटी भी चाहिए। आप तो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, राइट? सर बिल्कुल, देखो जनरेशन है सर, सर, देखिए इस यंग बारे में मैं जनरेशन कुछ है, कहना चाहता 18 से जो 21 इनकी रखी है एज, इस हिसाब से अगर बच्चे को फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगी तो मोस्ट ऑफ द चांस ये रहेंगे कि बच्चे गलत दिशा में जाने की बजाय फिजिकली फिट होंगे, और वो बच्चे आगे जाके अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो पुष्प जी की बात सुनते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैडम कि दिस इज हाउ वी कैन इंक्रीज द फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ आवर से आर्म्ड फोर्सेस, कि उनकी ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है वो उससे बढ़ेगी उससे, राइट? क्योंकि अगर देखिए सोल्जर हैज टू बी हेल्दी एंड एनर्जेटिक हिमसेल्फ, एंड एनर्जी चेंजेस विद द टाइम। आई डोंट से कि इट रिड्यूसेस, इट चेंजेस विद द टाइम, राइट? तो यहाँ पे हमें जोश और होश जिसकी बात कर रहे हैं बार बार, राइट? तो दिस विल हेल्प इन बैलेंसिंग दिस। यस, पुष्प जी आप क्या कह रहे हैं इस पर? क्या मैं कहता कि जी बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट्स, हम इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं कि भाई हमारा जो आर्मी का बजट है, उस बजट का कितना पार्ट हम किसकी साइड पर खर्च कर रहे थे। इसमें एक छोटी सी डिस्कशंस के अंदर ये डाल सकते हैं कि भाई मान लीजिए हमारे इंडिया के अंदर हम अपनी रक्षा बजट का कितना पार्ट सैलरी पैकेज में खर्च कर रहे थे, अग्निवीर आती है तो कितना पैकेज में खर्च होगा या कितना सेविंग होगी। इसी तरीके से जो इक्विपमेंट उनकी एडवांसमेंट के लिए हमें कितना चाहिए, हमारे पास कितना अवेलेबल है, इस स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पे रिसर्च की जा सकती है। इसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, उनकी कंपैरेटिव भी आ सकती है कि वो अपनी आर्मी के अंदर कितना पार्ट अपने इक्विपमेंट पर खर्च करते हैं और कितना सैलरी और इंसेंटिव पर खर्च करते हैं। एक्सीलेंट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। यस, गुंजन से समथिंग। गुंजन मैडम, आपने जी माइक ऑन किया था, बताइए। So we can also study the psychological impact of such schemes on the minds of youth, which is so vulnerable these days, because we have already come out of the pandemic. There is so much of insecurity, unemployment, और ऐसे टाइम पे ऐसी स्कीम लॉन्च करना जो आपके दिमाग में इतनी इनसिक्योरिटी ला रही है that what is my future going to be. So we can study the psychological impact of such schemes. आपने देखा सुसाइड का भी हमें पता चला इसकी वजह से, कुछ 2 लड़कों ने सुसाइड किया। So that means youth पहले ही इतना vulnerable है, और ऐसी स्टेज पे जहाँ इतने इनसिक्योर है, हम इस टाइम पे ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, तो हम इसके वो इम्पैक्ट स्टडी कर सकते हैं। Excellent, you know, excellent perspective. You are from psychology? नहीं sir, actually I am from management. You are management field. That is absolutely wonderful, right? तो मैनेजमेंट वाले तो सभी फील्ड के होते हैं, यही तो फायदा है ना मैनेजमेंट का। They are from every field, you know. But I yes, studied psychology in my graduation for 3 years, so I am very fond of that subject. So you are very fond of that subject. Wonderful, excellent. Yes, Subhash ji wants to say something. He has raised his hand. Yes. Unmute कर लीजिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। क्या पढ़ाते हैं सुभाष जी, कहाँ से हो? सर मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, राजकीय महिला
प्लीज राजनीति मत करना, राजनीति विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताना है आपने, ठीक है जी। राजनीति का आप एक तरफ का पहलू मत देखिएगा, राजनीति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। राजनीति का मतलब है बकवास करना या भ्रष्टाचार करना या गलत चीजें करना नहीं होता। राजनीति का मतलब है जो नीतियां बनती है वो राजनीति है। सही से डेफिनेशन ये होना चाहिए। जी जी जी। मैं इसको इस प्रकार की जो स्कीम है इस पर्सपेक्टिव में देखता हूँ कि जो राज्य है उसकी एक जिम्मेदारी एम्प्लॉयमेंट भी देना होता है, रोजगार देना भी होता है। अभी हमारे कॉमर्स के कुछ डॉक्टर साहब भाई साहब कह रहे थे कि हमें बजट को देखना चाहिए। हम जो लोग यहाँ पर स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, हम कितना कितना तनख्वाह लेते हैं, कितनी कितनी लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, क्या हमें 4 साल की नौकरी करनी चाहिए और उसके बाद चला जाना चाहिए? अभी जो पेंडेमिक आया, पेंडेमिक में हमने देखा कि हमें यहाँ सारा नेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे थे और वो पढ़ भी रहे थे, तो क्या सब टीचर्स की छुट्टी कर देनी चाहिए? इतना इतना तनख्वाह में क्यों देना चाहिए? वो सक्सेसफुल भी हुआ। और जो डिस्टेंस के बच्चे हैं, ऑनलाइन जो पढ़ते हैं, जो ओपन से जो जैसे ओपन हमारी यूनिवर्सिटी जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स भी लेते हैं। तो क्या सब यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बजाय हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाए? वहां पर तो आपको टीचर्स को तनख्वाह देने की भी जरूरत नहीं है। हम सब लोग तो पेंशन के लिए भी बात करते हैं। दूसरी बात ये सर कि जो हमारे एक मित्र कह रही थी कि भाई इससे जो फिजिकल एजुकेशन का बड़ा डेवलपमेंट होगा और बजट मजबूती आएगी, क्या अब नहीं हो रहा है वो? अब भी तो बच्चे फौज की तैयारी उसी प्रकार से कर रहे हैं। क्या उनको आप 4 साल के लिए वहां पर डालकर और एक मिलिशिया आप तैयार नहीं कर देंगे सोसाइटी में कि वो हथियार भी चलाते हैं? उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होंगी। अभी डॉक्टर गुंजन कह रही थी कि उनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि आज हमारी जो मुझे लगता है कि जो हमारी टाइम हो गया है, हमें सर्विस में आए हुए 15-20 साल कई लोगों को हो गया है। आज भी कल हमें कह दिया जाए आपको तो बहुत टाइम हो गया, आप घर बैठो, आपको क्या जरूरत है? हम तो एनपीएस के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, तो बात ही छोड़ दें। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अधर में उन लोगों को छोड़ना एक गलत रास्ते पर ले जाना है, और आज तक क्या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हम बजट की बात करते हैं, कितने देश हैं ऐसे, 4-5 देशों का हम उदाहरण देते हैं, वहां पर वो छोटे छोटे देश हैं, और जो हमारा एक जिम्मेदारी है स्टेट की वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और अल्टीमेटली वो इसी समाज में वो बच्चे खर्च करेंगे, उनके परिवार आगे बढ़ेंगे, उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। तो इससे जो एक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, जहां पर टुगेदरनेस की बात है, वो बेटर हो पाएगी इस प्रकार की स्कीम लेकर। दूसरा, मैं इसको आइडियोलॉजिकल रूप से इस प्रकार से देखता हूं। आई थिंक आपकी बात हमने सुन ली। जी जी, इस तरफ से भी देखता हूं कि ये एक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट इसका सर है, ये सारा हमें कैपिटलिज्म की तरफ ले जा रहा है। एक इसका सोशलिज्म का जो समाजवाद का एस्पेक्ट है, जो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना भी लिखा हुआ है, जो हमारे फंडामेंटल जो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, उसमें उनको तो पूरी तरह से वायलेशन हो जाएगा सर। तो आप मतलब पूरा आप ये देख रहे हैं, आप नेताओं की बात करें, एक आदमी 4-4, 5-5 बार एमएलए एमपी चुना जाता है, और वो ये पॉलिटिकल पार्ट है सुभाष जी। चलिए आपकी बात हो गई। मुझे कहना चाहिए कि आप 4-4 साल की नौकरी देना इस प्रकार से ठीक नहीं, बिल्कुल भी दैट्स मैं एब्सोल्युटली गलत। हमने आपका ओपिनियन इस पे नहीं पूछा था, मैंने तो ये पूछा था कि इससे हमारी रिसर्च प्रॉब्लम देखिए। अभी आपको इस पे आप लिटरेचर गूगल स्कॉलर पे ढूंढोगे ना तो कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। बट देखिए ये एक घटना है जिसने जर्नलिज्म के ऊपर एक रिसर्च इशू छेड़ दिया, एंड चित्रा वुड लाइक टू स्टडी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी। Am I right? See how agenda has been set. Yes, so we can look at various news channels or newspaper as of how they are reporting it and what kind of newspapers, news channels, how they are reporting it. और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अभी परसों मैंने एक न्यूज पढ़ी जिसकी हेडलाइन नेगेटिव थी, नीचे सब कुछ पॉजिटिव था, राइट? So this is how you see they create the narratives. And you see, from the physical education point of view, we have had a perspective. From the management point of view, we have had a perspective. Psychology point of view, collective psychology, we have had a perspective. And from the political science point of view, statesmanship point of view, we have had a perspective. So indeed, one single event, if we were to identify a research problem, if we were to write an article on this, right? Probably if you go to Google Scholar, you will never find any write-up on this. But the problem has emerged from the observation part. So this is a time when we need to take the students out of our classes. We need to take the students right into the field, right at a place wherein those students
they are actually witnessing the problem, they are feeling the problem, and then they are developing the say solutions from their own perspectives. Then they are developing the solutions from their own perspectives, right? So this is what is the need of the hour. जो डिस्कशन आपकी पहले हो रही थी, मोनिका मैडम इनिशियली बात कर रही थी कि you say and you see you are also talking कि भाई why we are not able to make an impact despite spending billions of dollars on our research, right? So much of support is there for research. Why industry is able to come up with a very fast research solution, but academic institutions are lagging far behind? The simple reason is that probably we are very far away from युद्धवीर जी प्लीज म्यूट कर लीजिए. 94684 admin please mute. Hello. 8833. Who is the admin please? Yes, you were saying something. Chitra madam, you were saying something? No. Okay. So you see, this is how we should help the students in identifying the research problems, right? This is how we should help the students to say, tell them to visit the युद्धवीर जी प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए. मिस्टर युद्धवीर रेदू, माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज. Right. So you see, this is how we need to develop upon a research problem, and then our research issues will be relevant, and they are going to create an impact, right? They are going to create an impact. अब NEP में undergraduate level पे research आ गई है. इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हो रही है कि what is the use, नकली projects होंगे, right? Fake research होगी. It will take away the workload of the teachers. So many things are being said about. But then the perspective is that if someone is interested in research, let him or her get a research training. So tomorrow, even if you don't join an academic institution or a place where there is the need for research, you end up becoming a better, say, professional in your very field. अब आपने सबने आरुषि हत्याकांड सुना होगा जो मीडिया में काफी छाया रहा था. ये ऑनलाइन क्लास में these are common issues, right? लड़के को अरे उसने घटिया सी वैल्यू लगा रखी है क्या है, पीछे not even responding to your messages. आपके राजेश गोयल ने Yudhvir sir, if you can hear us, please mute your mic. राजेश गोयल ने लगाई थी. Ma'am is there, she can mute Yudhvir sir. Who is the admin? I think Shifali ma'am is the admin. Shikha ma'am is also. Right. Yes sir, there are two people, one from the office. Shikha ma'am is So there. are they around? Are they around? Shifali ma'am? Because only can you please mute Mr. Yudhvir? Hello. Yeah. You see, this is how you see we need to say okay, we were talking about Arushi Hatyakand, right? मीडिया में काफी छाया रहा, पर आज तक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि तलवार दंपति ने ही उसको मारा है, राइट? व्हाट वाज द रीजन व्हाई दे वर नॉट एबल टू रीच आउट टू द राइट से कल्प्रिट? क्या उसके पीछे आंसर था? व्हाट इज द रीजन? So I guess the investigation was flawed from the very beginning. Very good, right? Investigation was flawed from the very beginning. And why investigation was flawed from the very beginning? Because maybe it was reported late. I mean, enough time had already passed away. Because the research process was not properly followed when the investigation was done. Investigation is nothing but hardcore research, right? So they were, you see, all police, they use questionnaire methods, right? All police, they use the questionnaire method. Even in your field also, you also use questionnaire method, right? So whenever they use any questionnaire method, you have to ask the right set of questions, right?
you have to ask the right set of questions, because if you will ask the wrong set of questions, then probably you are not going to reach out to the right set of the solutions, right? So today basically I have been called for taking a session on questionnaire design, right? For taking a session on questionnaire design. And literature review and questionnaire design, they both are very closely related to each other. That is why I made a passing reference to the literature review, because it has been told that a session on literature review has been done, right? देखिए, literature review में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, although the session has been done earlier and you have been told on how to conduct literature review, but the way in which probably I say look at literature review is that when you read an article, please do 2-3 things at that very moment. Firstly, use a referencing software to document that article that very moment, right? The moment you have read it. Second part is, please make a summary of that article in about 200 words, 150 to 200 words, right? Summary बनाने के बाद, next thing that you should do is make one-liner summary of that article also, right? जो आपने 250 words में लिखा, write it in 20 words also. Write it in 20 words also. And then go to the third stage, right? Then go to the third stage. Third stage is identify the tags. Tags are the keywords, right? Identify the tags of that article and put them into the referencing software. Okay, put them into the referencing software. So if there are, say, articles with the related tags, please connect them right into the referencing software, right? If there are articles with the related tags, connect them right into the referencing software. Then your literature review will be complete. Then your literature review will never ditch you. Then your literature review will be the one which will become the theoretical foundation of your research work. Then your literature review will actually give you the desired output which you want to achieve as a result of doing your research work. Is it okay? Am I able to explain this? Yes? Can you summarize it? Can you summarize what I have explained? Anybody? So whenever we are trying to do a literature review, we should ensure that that very moment only we connect tags and create a small summary for it, so that whenever we are trying to look back at it, it is easier for us to get the article, and we will also be recalling what it was about. And a small one-liner would help us to understand. I mean, if you have a keyword, then it is very easy to search it out. So this one-liner can be used as a searching tool. Very right. I believe 1 or 2 softwares also allow you to write this summary in the referencing software only. If I'm not wrong, Zotero does it. Yes, so Zotero. So I'm not sure of it, but some of the tools also allow you to write a summary right there. So it is also a very good thing. So if somebody wants to do that, they can do that as well. Yes, you are absolutely right. Right, Zotero does this. Right. I'll just moment. I'll share the screen. Right, for a moment, and then I'm taking you right to Zotero. Right, I'm taking you right to Zotero. So when you are going into the Zotero, when you have a first article, right, the first thing that you should be doing is that the info part, that must be absolutely correct, right? होता क्या है कि आपके आर्टिकल्स में कई बार रेफरेंसेस गलत निकल के आती हैं, और रेफरेंसेस गलत क्यों निकल के आती हैं? क्योंकि उनका मेटा डेटा गलत होता है, राइट? तो हाउ यू कैन कलेक्ट द मेटा डेटा? यू शुड करेक्ट द मेटा डेटा एट द इन्फो लेवल, राइट? देख रहे हैं आप? एम आई एबल टू शो इट? यस सर. नो? यस सर. यस सर. ठीक है जी. फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो अभी बात कर रहे थे चित्रा मैडम, कि यू शुड राइट डाउन दी नोट्स और दी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दैट एट दिस वेरी प्लेस, राइट?
तो ये देखिए इसमें Zotero में ये अलाउ करता है कि आप इसको यहीं पर लिख सकते हैं, ये आप नोट्स में भी लिख सकते हैं, राइट? तो when you will add this into the notes, within the notes also, you know, it will help you in say ये जो नीचे आपको पैराग्राफ में नजर आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा इसका एब्स्ट्रैक्ट हमने लिखा हुआ है इस थीसिस का, तो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी यूजफुल रिसोर्स। फिर उसके बाद ये होते हैं उसके टैग्स, राइट? ये हमने उसके 3 टैग्स ऐड किए हुए हैं कि व्हाट आर द टैग्स ऑफ दिस आर्टिकल। अटैचमेंट ये इसमें ऑटोमेटिकली Zotero ले लेता है, रिलेटेड शायद इसमें हमने नहीं लिखे हुए हैं, राइट? अब इसकी अगर मैं राइट क्लिक करके, राइट, इसकी अगर मैं राइट क्लिक करके रिपोर्ट बनाता हूं, राइट, इसकी अगर मैं रिपोर्ट बनाता हूं, तो then I am going to get all the details which I was looking for, right? Then I'm going to get all the details which I was looking for. So this is how you should be doing your literature review. देखिए जितनी मेहनत लिटरेचर रिव्यू पे करी होगी, जितनी मेहनत लिटरेचर रिव्यू पे करी होगी, उतना ही बढ़िया रिसर्च आउटपुट कल को आने वाला है, राइट? So you should really motivate the students to work very hard on literature review. And Zotero is a very beautiful, my favorite, right? People are using Mendeley, people are using EndNote, they are advanced, they are better, but this is simple, and you see this is really wonderful. So my suggestion is please use these referencing software. They enhance your productivity several times, right? So with this, let us come to our discussion on questionnaire design. So I'll just start the PPT once again. So questionnaire design. Whenever we have to do the questionnaire design, you know, the agenda of this presentation is going to be, first of all, we are going to define measurement. Then after that, scale development and questionnaire design. Mostly, you know, since I am from the say commerce field, management field, so probably, you know, most of the examples would be from this area, but this definitely has its own applications in other say rest of the fields as well. So before we really go about questionnaire design, the first thing that we need to understand is we have to define measurement, right? What exactly is measurement? Because unless and until we are not clear about what we want to measure, right, we cannot measure the right things. So we should define measurement, which is an integrating process of determining the intensity or amount of information about the constructs, concepts, or objects. Just a minute. Hello. Hello. Right. So it is an integrated process of determining the intensity or amount of the information about constructs, concepts, or object. So what exactly is a construct? Construct is something that is being measured. Whenever we are, irrespective of what subject we are, whether we are from the physical education or whether we are from the commerce or whether we are from psychology or whether we are from say any other subjects, pure sciences, you know, first of all, we really need to be clear okay, what is it that we want to measure. So that defining the construct is very important. Now, how to define a construct? For this purpose, you need to go to the, say, you need to go back to the Sati part. So from the theory, you put up what is construct, and then after that, you know, go about construct development, which is an integrative process wherein the researchers identify the subjective properties for which data should be collected for solving the defined research problem. Constructs, they can be, say particularly, they will have, they can be of different types. So we can classify the constructs into 5 types. The first construct measurement approach is the concrete or the measurable properties. देखिए, particularly in the behavioral sciences, particularly in the social sciences, there is a visible component and there is an invisible component of any activity, right? Of any happening, any event, there are 2 things.
either the visible part or the invisible part. So usually we are able to measure only the visible part or the concrete or the measurable properties, right? So we have got the concrete part. Second is the abstract or the subjective properties, right? The abstract or the subjective properties. That means the properties which probably we are not able to say see it directly, but they are the ones which can be measured indirectly. They can be imagined more. The third is the number of dimensions, concrete and abstract, right? Then operationalization, measurability of the issues of construct, and then reliability and the validity issues. So जो data है हमारा, the type of whatever data we have, whenever we have to do some research, the data is of 4 types. The first type of the data is the state of being or the verifiable facts, such as the physical or the demographic items, right? For example, whenever you have a state of being, the verifiable facts, which is observed, जो दिख रहा है, right? Which is tangible, which is measurable. So this is verifiable. Say you want to measure the height, weight, that is measurable. You want to measure the number of people, that is measurable. So all this is the verifiable facts. Second is the state of mind, the mental thoughts or the emotional feelings, right? Which come in the form of attitude, perception, and belief. Can anybody help me define what attitude is? Yes, psychology. Hello. What do you mean by attitude? क्या होता है जी attitude? Am I audible? Hello. Yes, sir, you are audible. Though I don't know the exact definition of attitude, but maybe response to a particular situation. Response is one of the components, right? Response is one of the components. Attitude is basically predisposition, right? Attitude is basically a sort of predisposition. So attitudes, perceptions, beliefs, right? We all have got stereotypes. We all form the perceptions about people, about individuals, about situations, right? So all this goes in the state of mind. So the second type of data is, one is the state of being, second type of data is the state of mind. Then third type of the data is the state of behavior, past or the current behavior, right? So what you said right now, that was state of behavior. So that is slightly different from the state of mind, because behavior is the actual action part. Sometimes what happens is we have a positive attitude, but our behavior is not positive towards that, right? There could be certain factors which are inhibiting that. So that is state of behavior. And third is the state of intention, the planned future behavior, right? Likelihood to engage in behavior in future. So we have got the state of intention, the future behavior. So data is of 4 types. And in most of the subjects which we are having, abhi political science ki baat kar rahe the, right? One of the teachers. So that is about, say, state of mind, state of behavior, and state of intention. So all the we can see the data in these forms. So whenever we have to do some research, we have to assign the scales. We have to assign the numbers, right? We have to assign the numbers or degrees of opinion towards attitude and concept. So scaling is basically about assigning the numbers, determining the quantitative measures of subjective or abstract concepts, and assigning the numbers to the properties or the objects, right? So this is what scaling is. So whenever we do scaling, we basically try to assign numbers to the measurable facts. We don't have any thermometer by which we can measure the state of mind of an individual, right? We don't have any parameter by which we can predict the behavior of the people. Although now mathematically we are able to do it, but still, from the traditional approaches towards the research methodology,
we have to rely on the scales. We have to rely on the scales, right? Do we have a break in between or no? We go continuously. Yes, we can have, sir. So we have a 10-minute break. At what time do you have the break? So whenever you feel comfortable. Right. And until what time is the session? 10 minutes. So 1 till 1 p.m. sir. Till 1 p.m. Right. So let us have about 5-10 minutes break. I have so many visitors around, right? So let me just finish off. So we'll meet after 10-15 minutes. Okay. Okay, sir.
So very good afternoon. I find lots of people have left. गुड आफ्टरनून सर. जी गुड आफ्टरनून डॉक्टर सुभाष. डॉक्टर साहब कहाँ हो आप? सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन सोनीपत में अध्यापन कर रहा हूँ. अच्छा ग्रेट. एंड चित्रा मैडम, वेयर डू यू टीच? Sir, I am in Government College Panchkula, Sector 1. Government College Panchkula. Okay. जी. Right. Great. Fine. So people have left the meeting, I think so. Everybody went offline. So they'll join back. They'll join back in a minute, right? Chaliye, great. Once the message goes, class has started, so they'll join back. Great. I hope you find it interesting. यस सर. अब ये थ्योरी के ऊपर देखिए मैं क्या बात करूं मैं, बिकॉज आई बिलीव ईच वन ऑफ अस नो पॉइंट इन रिपीटिंग अ वेरी टोटली थ्योरेटिकल से लेक्चर. इट हैज टू बी मोर लाइक ट्रांजैक्शनल, वेयर इन वी एक्सचेंज द थॉट्स, वी एक्सचेंज द आइडियाज. तो 7 days के बाद वाकई ही काफी कुछ सीख के जाते हैं हम लोग घर, इसमें कोई शक नहीं है. स्वाति मैडम, वेयर आर यू फ्रॉम? म्यूट है आपका. सर जब मैडम में डॉक्टर शेफाली जी आपका परिचय करवा रही थी तो हम सुन नहीं पाए, वो बहुत ज्यादा जो ना आवाज नहीं आ रही. तो सर आप किस विश्वविद्यालय में सेवारत हैं सर? हाँ जी, मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हूँ, राइट. डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हूँ मैं. तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. तो बाकी आजकल चेयरपर्सन का दायित्व है, वो काम भी कर रहे हैं साथ में अपना ये फ्लेयर फॉर एकेडमिक्स नहीं छोड़ते, क्योंकि इससे क्या होता है कि एटलीस्ट आप जुड़े रहते हो पढ़ाई लिखाई से. अदरवाइज तो एडमिन इज अ फुल टाइम काइंड ऑफ अ थिंग. सो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट. सर आप जैसे विद्वान लोगों के लिए बाकी देखिए ये सब्जेक्ट बड़ा अच्छा हो रहा है कि एनईपी में स्ट्रीम खत्म हो रही है, राइट. बिकॉज वी नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ एवरी सब्जेक्ट. और बड़ा अच्छा है कि एक सब्जेक्ट आप दूसरे स्ट्रीम का पढ़ के आओ आप, राइट. अब जो आपका जर्नलिज्म है मैडम, जर्नलिज्म और हमारा एडवर्टाइजिंग जी, ये लगभग बिल्कुल सिमिलर होता है, राइट. Yes, और sir, इसके Kamal साथ has a साथ paper on business communication which is very similar to our advertising and PR. जी. Yes. And I was director public relations of Kurukshetra University for 3 years. तो जब मैं बना तो बोले जी कॉमर्स वाले क्या चलाएंगे PR, right? But then it was like, you see, we had the basic flair because of this. So I was able to, I don't know whether I was able to do justice, but I think I did well, right? So it is more about the way we think and the way we act, and it's beyond the disciplines. It's basically about the, say, right approach that is really most important. So I think 26 people have joined, total 30 kuch hai, right? So I think 3-4 more will join course of time. So let us again start our small presentation, right? मैं presentation आधा को घंटा से ज़्यादा नहीं चलाऊंगा. After that I want more of a discussion, right? So please keep your not questions, please keep your points wherein we should discuss. ठीक है जी. क्वेश्चन तो देखिए हम एक दूसरे से पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक दूसरे वी आर इन द सेम बोट, राइट. तो यस, तो वी वर टॉकिंग अबाउट स्केलिंग. कैन वी स्टार्ट और वी वेट अ कपल ऑफ मिनट्स? वी विल स्टार्ट, राइट. So we were talking about scaling. In the scaling, we were talking about assigning numbers to various opinions, attitudes, and concepts, right? We determine the quantitative, say, measures of subjective and abstractive concepts and assign numbers to the properties. In order to do the scaling part, we make use of the measurement scales. अभी आपका जो सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, तो एक डिपार्टमेंट के पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट पीएचडी कर रही थी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, राइट. अपने डिपार्टमेंट में वो पीएचडी कर रही थी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर. तो मैं इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाता था,
So that girl came to me, and we used to have lots of discussion on different aspects related to international trade. So she said that probably you are studying it from the perspective of, say, commerce, economics, and I am studying international trade from the perspective of, say, international relations. So usually same phenomenon, same happenings, you know, they have got diverse perspectives. And she said we use content analysis as a method for, say, reaching out to the conclusions. In, say, mass communication, they use the deductive approach. For example, कोई पत्रकार जाएगा किसी यूक्रेन के किसी गांव में और फिर वहां जाके वहां के विजुअल्स दिखा के then he or she will try to build a big picture, right? कि ये हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है. So you see, they will build the inductive approach, whereas somebody from psychology will go and they will build the inductive approach, right? Because they would like to have their, say, something on collective psychology, how to get people out of depression, or how to build morale during the time of war, right? So you see, same events, diverse subjects are going to study it from their perspective. For this purpose, they need the data, right? They need the data, which are the raw facts. Data is nothing but raw facts. Now this data has to be assigned the numbers. So for assigning the numbers, we have got basic levels of measurement scales, right? We have got the basic levels of measurement scales. And for this purpose, we have got 4 scales which are used to measure the external data, particularly in the behavioral sciences. I'm sure some of you might have even studied these 4 scales, right? So these 4 scales are the nominal scale, the ordinal scale, the interval scale, and the ratio scale. Let us try to understand each one of them. The nominal scale. Nominal scale is a one-level measurement, right? In which the numbers are used to classify the products, which are used for demographic variables, type of products, etc. अब इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो सुभाष जी आप सोनीपत में हैं, तो सोनीपत का पिन कोड क्या है? हेलो सर 131001. वंडरफुल, 131001. यस सर. और चित्रा मैडम आपका क्या है वहां पे पिन कोड पंचकुला का? 134109. 109. अब ये बताइए कि ये अब देखिए नंबर्स में काउंटिंग में पंचकुला का जो कोड नंबर है, पिन कोड है, दैट इज मोर देन द पिन कोड ऑफ सोनीपत. तो डज इट मीन दैट पंचकुला इज मोर इंपॉर्टेंट देन सोनीपत on the basis of pin code only? No, sir. Of course not, sir. Of course not, right? Why? Because pin code has been made only and only to assign the, say, identification numbers to the political constituencies. Am I right? This is nominal scale. अब आप लोग क्वेश्चनेयर भरवाते हैं, राइट? उसमें डेटा इकट्ठा करते हैं, मेल, फीमेल, रूरल, अर्बन, राइट? और यूजर, नॉन यूजर, राइट? तो ये जो डेटा है, दिस डेटा इज मेजर्ड ऑन द नॉमिनल स्केल. दिस डेटा इज मेजर्ड ऑन द नॉमिनल स्केल. तो मान लीजिए आप मेल को 1 असाइन करते हैं, फीमेल को 2 असाइन करते हैं, तो इन दिस केस 2 इज नॉट मोर देन 1. Rather 2 and 1, they are only representing the, say, class of a category of the subject which is being measured. So this is what is known as the nominal scale. Am I clear? So when we have to use the nominal scale, the type of analysis that is done, that is either the counting, frequency, percentage, mode, binomial, or chi-square test. So this is what is used for the nominal scale. अब ये जो nominal scale है, this is really very very basic, and nominal scale does not lead you to in-depth research, right? तो nominal scale से हमें next पे जाना पड़ता है, that is called ordinal scale, right? Ordinal scale. Ordinal scale performs information about the ordered relationship among the objects.
अब देखिए क्लास होती है, उसमें कुछ एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक बच्चा सेकंड आता है, एक बच्चा थर्ड आता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस? हेलो. That one is better than the other. One is better than the other, or one scale. has scored more marks than the other, right? Now the difference between first and second, is it equal to the difference between second and third and fourth, or no? No, sir. No, not necessarily. We really cannot draw any conclusions that the difference between, say, first and second position, चाय पिला दे भाई, first and second position and second and say third position, that is not equal. So this is only representing a particular order, right? This is only representing a particular order. अब कई बार क्या होता है कि हमें जब प्रेफरेंस पूछनी होती है कि do you like Nike, do you like Adidas, do you like Reebok, we may not be able to give our preferences, but we can definitely give our, say, order of preferences. So a lot of research basically uses the ordered scale, ordinal scale, right? For example, ranking of preferences, statistical, and here you are able to find out that what is the order of preference for a particular, say, brand, or for a particular, say, choice of the product. अब जैसे मान लीजिए आप लोग जब डेटा इकट्ठा करते हो, पोलिंग के बाद आप निकालते हो, सर्वे करते हो, राइट? या से पोलिंग से पहले सर्वे करते हो, तो उसमें आप पहली पसंद निकालते हो कि मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद कौन, आप किसको देखते हो आप? तो दैट इज ऑर्डिनल स्केल. व्हाई? बिकॉज यू हैव गॉट 3, 4, 5 कैंडिडेट्स and you try to look at them in a particular order and you try to find out, okay, this is the one who is most preferred in this particular constituency as a prospective representative. So this is how you see you make use of the ordinal scale. After you see, this is an example of the ordinal scale. Say respondent A likes, say, Nike the most. He or she assigns second preference to Adidas and third preference to Reebok, whereas respondent B assigns first preference to Adidas and second preference to Nike and third to Reebok, right? So this is an example of an ordinal scale. फिर उसके बाद third type of a scale, which is the most commonly used scale, this is known as interval scale, right? जैसे हम मरकरी में अपना टेम्परेचर देखते हैं, तो मरकरी की कैलिब्रेशन कैसे होती है? क्या डज एनीबडी रिमेंबर हाउ ए थर्मामीटर ऑफ मरकरी इज से कैलिब्रेटेड? याद है आपको? हेलो, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ आइस? बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है? सर 0 या उसके आसपास ही होता होगा. 0 ही होता है, राइट? उसका टेम्परेचर क्या होता है? वो 0 ही होता है, राइट? और बॉइलिंग पॉइंट का क्या टेम्परेचर होता है? सर 100. वो होता है 100. यस. तो अब 0 और 100 के बीच में हमने उसे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, राइट? तो उससे हम क्या नापते हैं? टेम्परेचर. एंड द अजम्पशन इज कि वो 100 पार्ट्स इक्वल हैं, राइट? जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हों, पर चलिए हमने मान लिया कि those 100 parts are equal. So this way we have assigned an interval scale which has been adjusted in terms of a rule that has been established as a basis of making the units equal. Units are equal is only an assumption, and interval scale has a absolute zero as well as a unique origin, right? और इंटरवल स्केल पे आप कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज कर सकते हो. सो दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड, मोस्ट यूज्ड स्केल which is used in the social sciences. After interval scale, the next type of a scale is a ratio scale, right? It is expressed as a ratio of 2 dimensions. What is a unique zero? Pardon? What is a unique zero? Good. Do you remember I have explained you the ordinal scale just now? Yes, sir.
Ordinal scale क्या है? Can you just recall? So which has an order of preference when you're Very good, right? Which has an order of preference, liking or disliking. जी. Right? Now, which is, suppose there are three foods, right? One is kaddu, second is bhindi, and third is suppose koi or chane. Which is a food that you dislike the most out of these three? Bhindi. Never Bhindi. had it in my life. Yeah. Hanji? Never had it in my life. I don't like it. You don't like bhindi, you never had it in your life, right? कितनी आपने उसके बारे में एडजेक्टिव्स गिन दिए हैं. अच्छा, आप विदेश गए हैं मैडम? Not yet, sir. Not yet. अच्छा जी, चलिए. बिल्कुल आपकी तरह मुझे कद्दू बड़ा गंदा लगता है, सच में. हाँ, बहुत गंदा लगता है. कभी भी घर पे बने तो मैं कभी नहीं खाता उसको, राइट? दही के साथ रोटी खा लूंगा, मिर्ची के साथ खा लूंगा, चाय के साथ खा लूंगा, बट कद्दू के साथ नहीं खाऊंगा. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई कि once I went for an international conference and I went to USA, California, और कैलिफोर्निया में जो कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक वाज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, वेरी वेरी बिग यूनिवर्सिटी. तो वहां पर मुझे खाने में वही उनका अमेरिकन खाना ही था, और अमेरिकन में भी वेजिटेरियन जो ऑप्शंस होते हैं वो और भी कम होते हैं. वेजिटेरियंस को सिर्फ पत्ते खाने को मिलते हैं, राइट? ओनली पत्तास. तो बड़े परेशान. तो फिर वहां पर मुझे एक सरदार फैमिली मिली. किसी ने फोन किया कि हाँ वो हमारे दोस्त है, वो मुझे मिलने आया. तो कहता है सर कोई नहीं, मैं आपके लिए घर से खाना लेके आऊंगा. और वो घर से मेरे लिए 4 चपाती और कद्दू की सब्जी लेके आया, और मैंने कद्दू इतना खुश होके खाया जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो मुझे, राइट? तो प्रोडक्ट विच वाज absolutely hated, right? That became the most preferred product at that particular situation. In the ordinal scale, there is no absolute zero because there is no lowest degree of either hatred or liking, right? But in the case of interval scale, we can assign an absolute zero in terms of liking or disliking. Is it clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Am I Yes, able sir. to explain you? Yes, sir. Wonderful, great. तो अब जिस दिन आप भिंडी खाएं उस दिन आप इसको याद कर लेना कि मैंने भिंडी उस सिचुएशन में खाई है जिस सिचुएशन में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और बहुत दिनों के बाद मुझे ये फूड मिला, एंड ऑल्दो यू डिसलाइक्ड इट यू वर एबल टू हैव इट, राइट? तो एब्सोल्यूट जीरो भी वहां पर मीनिंगलेस हो जाएगा उस दिन आपके लिए. Yeah, I hope I also go for a conference to USA and have bhindi over there. Oh, that is great, right? We pray for your say visit. बहुत अब तो ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई हैं. Sir, I got a scholarship to visit Italy in May 2020. Great. I got a scholarship for an international conference, but right then Corona came and I could not go. जी. चलो अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छा करता है, right? जी. So you will go to some other country. But Italy also you are going to face the same problem. लेकिन विदेश से जब भी जाओगे आप, always food is going to be an issue, right? And particularly if you are a vegetarian, तो समझ लो कि आप और भी बड़ी मुसीबत में आ गए हो. Yes, Because vegetarian options and उसमें भी एग ना खाते हो तो आप बिल्कुल ही गए आप, right? जी. तो इसलिए बट स्टिल ठीक है, काम चल जाता है, राइट? जी. ओके, फैक्ट्स अबाउट स्केल. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अभी इसका जो मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं. से नॉमिनल स्केल, फॉर एग्जांपल इन दिस केस आई वाज टेलिंग यू yes or I think one slide is missed. कौन सी? रेशियो स्केल. ओ यस, वेरी राइट. तो जो 4th स्केल है दैट इज कॉल्ड रेशियो स्केल, राइट? रेशियो स्केल इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ few dimensions. It is measured from a base 0, right? And the measures are actual amount of the variables. It is amenable to all statistical techniques, including the geometric mean, the harmonic mean, and the coefficient of variance. Okay? तो इसके और एग्जांपल्स हैं, से नॉमिनल कोड के yes, no, male, female, buy, did not buy, postal code, all these are examples of nominal.
Say ordinal में we have the rankings. We choose from the following: dissatisfied, satisfied, very satisfied, delighted, or level of education. You know, all these are the examples of ordinal scale. Third are the examples of interval scales. Say 100-point job performance rating assigned by the supervisors. Say we assign 0% to the worst performers and 100% to the best performers, right? Temperature, type, attitude scales. And then last is ratio scales. इसमें क्या है? Amount purchase, sale persons / sales volume. Do you drink coffee, cold drinks? Hello? Do you take cold drink, soft drink? No, sir. No, sir. Right? Or coffee? Yes. How many liters in a week? So 1 cup a day. I don't know liter or what. One cup a day, right? That means about 150 ml multiplied by 6. Let us assume 1 liter per week, right? Now that is an example of ratio scale. That is an example of a ratio scale. You see, we all play with these numbers in our daily life. Only point is, we have to identify in which situation are we playing with these numbers. Okay. I'll just give you an example of how one information can be asked in each of these 4 scales. For example, suppose you want to know how often do the customers use their primary automobile service providers facilities. For example, suppose you have purchased a car, right? आपके पास कौन सी कार है, madam? Sir, I have an Ertiga. Excellent, wonderful, right? How old is your car? So 1.5 year old. 1.5 year old. Where do you take your car for service? To the Maruti workshop. To the Maruti workshop, right? So when your car will get old, आपके कुछ participants के पास हमारे पुरानी कार भी होगी. क्यों सुभाष जी, पुरानी है आपकी गाड़ी है, नई है? सर पुरानी है. कितने साल पुरानी? सर 7 साल पुरानी, 6-7 साल पुरानी. कौन सी है? सर अल्टो 800. वेरी गुड, वंडरफुल. तो अल्टो 800 की सर्विस आप कहाँ करवाते हो? सर मैं मारुति के शोरूम पर भी करवाता हूँ और बाहर भी करवा लेता हूँ. और बाहर भी करवा लेते हो, राइट? गाड़ी नई है तो आप सोचोगे भी नहीं कि मैं बाहर करवाऊं. एम आई राइट? सर अगर कोई मिस्त्री अगर बहुत रिलायबल है, हमने उसको देखा, जाना है, तो बाहर करवा सकते हैं सर. मेरा ऐसा समझ है, और कई बार बेटर करते हैं और उसका कॉस्ट भी कम रहता है सर. ये अल्टो में शायद हो, बट अगर आपके पास MG हेक्टर है या क्रेटा है या कोई और हाई एंड गाड़ी है, थार है, राइट, तो मैं नहीं समझता कि आप ऑथोराइज्ड एजेंसी के बाहर उसकी सर्विस करवाना पसंद करोगे. मैं अभी आया हूँ, उसको अरेंज करना है अभी. हाँ जी, उस रेंज में नहीं, उसको अरेंज करना है. कोई बात नहीं, आ जाओगे. ये तो देखिए समय की बात है. थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे हमारा लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते हैं और जैसे जैसे हमारी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, ये चीजें तो आने वाली हैं. पहुंच जाओगे आप, डोंट वरी, राइट? सो वी हैव इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट to determine how often customers use their primary automobile service. अब ये primary automobile service is the one which is provided by the manufacturer, right? तो इसको हमें पूछना है on 4 scales. Let us try to see how we can ask it on nominal, ordinal, interval and ratio. So on the nominal, when we have to ask, the question will be, when your vehicle requires maintenance, service, or you have problems, do you usually take your vehicle to primary automobile service provider, right? जैसे मैंने अभी पूछा कि both of you have a car which is made by say Suzuki. Do you take your car to the Suzuki showroom for service or not? The answer is yes or no, right? और तीसरा ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन जो है वो समटाइम्स का आ जाएगा इसमें, राइट? जैसा अभी सुभाष जी ने बोला कि कभी कभी. सो थर्ड ऑप्शन वुड बी समटाइम्स. सो वी हैव ए नॉमिनल क्वेश्चन इन विच वी आर टेकिंग. वो हो गया काम वहां पे? क्यों? हाँ जी,
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी. So we have this is how you see the question has been asked on the nominal scale. Online classes की ये बड़ी problem है कि we all do multitasking. You as participants and we as say resource persons all are doing the multitasking. अब इसके फायदे भी हैं और इसके limitations भी हैं, right? तो चलिए, but ठीक है, as long as it does not interfere with the transaction of say learning and teaching, I think so it's okay. So now the same question, same information requirement, we want to ask in the ordinal scale, right? In the ordinal scale, the question will change. The question will be, when your vehicle requires maintenance, service, or you have problems, how often do you take it to your primary automobile service provider, right? अब उसमें हमने yes no पूछा था, इसमें हमने ये 4 ऑप्शंस दिए हैं. Never, seldom, occasionally, usually, every time, right? तो अभी जो पिछला रिस्पॉन्स आया था अर्टिका वाला, अर्टिका में probably the respondent is going to tick every time. Am I right? Hello? Yes, sir. Right? Because the car is new, she has got more reliability on the say primary service provider. अब जो मारुति का शोरूम है उसमें इनको मिस्त्री का पता नहीं है कि कौन सा मिस्त्री इनकी सर्विस कर रहा है गाड़ी की, right? But she has got more trust on the say place because she believes that Maruti is going to follow the standard operating procedures and her car will be more safe and will be handled properly in that particular settings. अब हमारे दूसरे सर हैं, वो उनका रिस्पॉन्स ओकेजनली या यूजुअली आएगा. Am I right? सुभाष जी? यस सर, यस सर. उसके साथ ये भी बात है कि जब नई ली थी गाड़ी तो शोरूम पर ही जाता था मैं, और जब वो थोड़ा सा पुरानी होगी तो फिर सोचा कि बाहर भी करवाई जा सकती है. ये राइट. तो we have say one variable कि as the age of the car increases, right? Yes, sir. Probably people switch over to the other option. So we have never, seldom, occasionally, and every time. So this is how you see in this case we are able to ask the same questions. अब जो पिछला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है, दोनों में से क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? Sir, your voice is breaking. Hello. Internet connection is, erratic everywhere. My question is that which question, the first one that is on the nominal scale, when I had said when your vehicle requires maintenance service, do you usually take the vehicles to your primary automobile service provider, and the answer was only yes or no. Or when we have the ordinal question, when your vehicle maintenance, how often do you take it to your primary service provider? Which of the two is able to extract more information? The second one. Ordinal. Second one. Very right? The second one is able to extract more information, right? So sir, I have a question. Yes, please. Sir, like you have put a 5-point scale in this. So is a 5-point better or a 6-point better? You see, you have talked about sensitivity. 5-point, 4-point, 6-point, 7-point. This is known as sensitivity of the scale, right? It depends upon what you are measuring. So depending upon, say, what you are measuring, if you are sure that your respondents will be able to differentiate between, say, the options on a 5-point scale or 6-point scale, then you should go for higher sensitivity. अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, we have never, seldom, occasionally and usually. Can you tell me the difference between seldom and occasionally? Yes, sir. What is the difference between seldom and occasionally? Sir, seldom is rarely we do something. Yeah.
Very few times. Seldom. Seldom is very few times, and occasionally is More often than it can be otherwise very also. few times. It can be otherwise also, Sir, or no? sir, I think seldom means Seldom कि is हमने more कभी of a use ही नहीं negative किया। towards approach हाँ, rather कभी than preference ही usually नहीं देते हम। So this is what is sensitivity. Got it? This is what is sensitivity. Now, if you increase the sensitivity, probably the customer or the respondent gets more choice, right? But from the perspective of the results, sensitivity does not make much of a difference, right? Sensitivity does not make much of a difference. The, say, deciding factor in this case would be the type of respondents, how easily they are able to understand the scale. Okay. Now you all are so highly educated, you are able to talk about the lexicon or talk about the, say, language component of seldom and occasionally, and you are able to identify the difference between seldom and occasionally. But maybe for a person who is not so, say, familiar with the language component, may misinterpret seldom and occasionally. So depending upon who is going to respond, you should choose the sensitivity of the scale. I hope, am I able to convey? Yes, sir, very nicely. Thank you. Wonderful, right? Then after that, the next type of the say question is the interval scale, right? Now we are asking the same question, and this question is being asked on the interval scale, and the statement is formulated as, since purchasing your vehicle approximately, how often have you used the services at your primary automobile service provider? Got it? So we have changed the question now, that since purchasing your vehicle approximately, right? You purchased it 1.5 years ago, you purchased it 6 years ago. And now we are trying to be a little more, say, concrete, how you use the services at your primary automobile service provider. And the answers which we are trying to take is probably less than 3 times, 4 to 8 times, 9 to 12, right? We have divided it into intervals. And this is how we are getting the, say, responses on this. Okay? And fourth is the ratio scale. Ratio scale is, in past 12 months, did you take your vehicle for service or repairs to your primary automobile service provider? And we are seeking the answers as dash number of times, right? We are seeking the answer as dash number of times. Okay? तो इस तरह से हमें जो ये same information है, we can ask on the 4 scales. Sir, one more question. Yes. Sir, it is very difficult for me to always decide what should be the interval. I am always confused. I mean, like in this case, 3 was the interval, like 3 numbers. So how do you decide like what interval would be good enough for your particular? Can you give me an example where you got confused? So wherever, like if I read certain research papers, I am not able to justify why this person has taken this particular interval only. Suppose like connected to my own work, I was studying about social media, how people project themselves on social media. Right. I was studying their virtual self. So like I was asking them, how many times do you log in on your Facebook accounts a day? So how do I decide what should be, like 5 times a day, more than 5 times a day? If I do such a scaling, then how do I decide what would be the appropriate? Good. Very good question, right? So in this case, you know, the best is when you don't know the population mean and the sample mean, right? Now in this case, you really do not know that how many times on an average a person logs into the social media. तो इसके लिए देखिए जो बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है, जो आइडियल तरीका है, वो तो ये होगा कि you choose 10 people, right? 10 स्टूडेंट आपने चूज किए and you install an app. एक ऐप आता है उसमें स्क्रीन टाइम वाला ऐप आता है, right? You install an app on their, say, cell phones, screen time app, and then after that take the data once a day
कि एक दिन में उन्होंने कितनी बार फेसबुक पे लॉगिन किया या उन्होंने कितनी बार जो है उसको इंस्टाग्राम या उस पे लॉगिन किया. Got it? So you will have a data from a sample of the people and you will find out the range. Now the sample which you choose, that should be diverse, right? Which should represent the population. For example, you know, somebody should be a teenager, somebody should be mid-ager, like that, you know. You keep a sample. तो उसमें maximum और minimum निकाल लो आप. Got it? जी. Maximum और minimum निकाल लो आप. Maximum is, let us assume के Facebook, वैसे आजकल young generation Facebook कम use कर रही है, वो Instagram पे ज़्यादा है. They are more on Insta, right? True, sir. And you see our generation is more on Facebook, right? We people are still comfortable with Facebook, right? Yes. So maybe you will get a response to say maximum and minimum. अब ये maximum और minimum को फिर you can divide it into say 4 or 5 say intervals depending upon say your own judgment. Is it clear? Yes, sir. ये तो है साइंटिफिक तरीका, बिल्कुल से करेक्ट. दूसरा तरीका क्या है कि आप अपनी आर्बिट्रेरी अप्रोच जिसको बोलते हैं, राइट? आफ्टर ऑल यू आर आल्सो रिसर्चर, you have your own observations, you have read your say research papers as well. See from the literature or from secondary sources what is the range of the say data which has been reported in the literature. Ab everybody may not be ready to say allow you to download an app on their cell phones and then share their data, that which app were they looking for in a day, right? Right. Or probably when you are observing people may have the guarded reactions. Of so course. it may be difficult to get the data from those people. True, But sir. if you have the data from say secondary sources, some other person has done the study, then in that case you can use that also as a base, right? You can use that also as a base. तो फिर क्या होगा कि आपने क्वेश्चनेयर बना लिया, फिर आपने पायलट टेस्टिंग करी, तो पायलट टेस्टिंग से आपको रेंज पता चल जाएगी, राइट? दैट वेदर योर रेंज इज करेक्ट और नॉट. And from after the pilot testing also, when you are doing your regular data collection, again keep on looking at the range at that time also, right? देखिए, data collection is a very dynamic process. You should not think that once a questionnaire is made, you know, then everything has to be according to that say rule book only. It has to be then according to the logic. So keep your mind always actively focused on what is coming out of say the observation part also. तो कभी-कभी क्वेश्चनेयर आपको एक अधूरी पिक्चर देगा, ऑब्जर्वेशन से कोई नया क्लू भी आपको मिल सकता है, राइट? तो वो भी जरूर आप देखते रहिए. Got it? True, sir. Thank you, sir. What was your finding? By the way, your research work is very interesting. I also work on social media. मुझे अच्छा लगता है सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करवाते हैं. क्या फाइंडिंग थी आपकी? Sir, I at the end of it proposed a model in form of the conclusion. It is called the model of virtual life cycle. And it talks about how people, it's basically based on a sociological theory of dramaturgy, if you have seen it or read about it somewhere, by Irving Goffman. So it says that people basically have two kind of lives. So there's a backstage where they plan and how they'll come on it's a little bit from the Shakespeare's All Stages a play as well. Excellent. So the real lives of people are basically their backstages where they plan how they will showcase themselves on the front stages, which is their social media profile. So Wonderful. people do a lot of thinking and planning, and they would like want to tag themselves and check into places which are high end. I mean, they may not be visiting those restaurants, but they may be fabricating it. So all that was there in the studies. Excellent. What is the name of the model? I'll just note it down because I find it interesting. क्या So नाम I'll बताया share आपने it with you. So it's model of virtual life cycle. Model of virtual life cycle. Just a minute. Yes, sir. Right? So I am planning to get it published in a journal very soon, and I would Excellent. love to share it with you. Sure. Yeah. Yes.
Please do, right? I'll be Sure. happy to read it. और वो social theory क्या थी? So it's theory of dramaturgy. Theory of Dramaturgy by Irving Goffman. Okay, thanks. You know, I also don't skip a moment wherein I try to get some ideas. And you're absolutely right. You know, we all have a fake life. I would not say fake. I would say a different life on the online platforms versus a life which we actually lead, right? And I usually teach my students that you all should learn how to manage the social media carefully and project a personality according to what you want to project. So, because you know, today social media profiles are checked, invariably checked everywhere, whenever you are, whether you are going for job or whether you are going for, say, travel abroad or anything, you know, social media profiles are checked. So that has to be kept very clean, and that has to be kept very, very carefully. But yes, this is indeed say e-personality is something that is really very say unique concept that is emerging. So there is also with so much of artificial intelligence, you know, all around us, so all our secrets are out because of social media only. I came across a small documentary which told you that whatever we are talking, all that is also being recorded. So people like Mark Zuckerberg and all, they don't have Facebook and anything on their mobile phones, because each and everything that we are doing, I mean, whatever technology we are using, like you are saying, it is the age of data. So everything is being, you know, recorded and it is present somewhere on the net. So this is also a very, very. आप एक काम करना, आप Instagram खोल के, right, refresh करके, फिर कोई भी word बोल देना, कोई भी word, right? जी जी. और फिर उसके बाद दोबारा refresh करके बंद कर देना Instagram. तो 3-4 मिनट बाद दोबारा Instagram खोलोगे आप, तो आप देखोगे उसी चीज की एड्स आपको आनी शुरू हो जाएंगी. Of course, बिल्कुल सर, बिल्कुल. Right? So you see, I studied this, but ये ऐसा नहीं है कि Instagram is listening to what you are talking. This is a misnomer, right? ऐसा नहीं है. Basically, what happens is we leave the digital footprints at multiple platforms. Yes, right? we do. We leave the digital footprints at multiple platforms, and Google picks up those digital footprints and gives you the suggestions. And we somehow tend to relate, saying that probably Google is sniffing at our conversations or watching us doing things, right? No, it is not so. Secondly, you can also control the privacy settings of Google, right? Yes, sir. तो ये चीज आप कर सकते हो आप easily. It is not a big deal. If information technology snoops into your daily life, information technology also has the, say, safeguards by which you can get out of these risks as well. So only thing is, it's got to be being vigilant. The majority of users are not aware of all the privacy settings, and especially young children. Yes, they are not bothered. They are not bothered. The problem is they don't understand the consequences of it, right? They don't understand the consequences of putting everything. अभी एक बड़ा फजूल का ऐप है Snapchat. ठीक है, Instagram तो फिर कुछ सिर पैर है उसका, right? But if you use Snapchat, you will find that there is absolutely zero value addition in Snapchat, and every second of your life is being shared by people, by you with people, right? Yes, sir. Every second of your life is being shared by you with your people, and they really do not know that, you know, the person with whom you are sharing, everything is got its life cycle, right? So after a particular point, probably the same intimacy may become your biggest problem for rest of your life. Yes, sir. They are really not able to understand its consequences, right? But probably we need to train our young generation that this is something they should be careful about. Not only young, old generation also, middle generation also, right? Yes, sir. Yes. अभी तो जो मिड एज के लोग हैं ये ज्यादा सोशल मीडिया पे आए हुए हैं, right? Yes. I find them more on social media. But social media is good, but they should project the personality. अब आने वाले टाइम में तो ये nominal scale, ordinal scale सब उड़ जाने हैं ना.
आने वाली जो भी रिसर्च होनी है दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द बिग डेटा। सोशल मीडिया पे हम हर सेकंड में पोस्ट डाल रहे हैं अपनी, जो भी क्वालिटेटिव लिख रहे हैं, नो एवरीथिंग अबाउट आवर एटीट्यूड बिहेवियर दैट कैन बी ascertained, राइट, दैट कैन बी ascertained। तो सब कुछ हो सकता है। ट्विटर ट्रेंड्स जो हो रहे हैं और ये जो टूल किट्स की बात करते हो आप, राइट, सो ऑल दीज आर से द न्यूअर फॉर्म्स ऑफ से inputs that are emerging and they are going to shape our lives. Okay, but very interesting things. Okay, so I'm going to skip this stuff. ये थोड़ा सा दोबारा repetition था because we're trying to explain how the same question can be asked in different ways. We'll go straight over to the scale development. देखिए, scale development is a process of developing a reliable instrument which measures the desired variables correctly and accurately, right? Systematic and scientific process of identifying the item statements and the scales for measuring them. We had a person from psychology. Hello, कौन थे psychology से? What is her name? डॉक्टर गुंजन जी, उन्होंने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी पढ़ा है जी। अभी हैं, हमारी बात सुन रहे हैं या ऑनलाइन क्लास में हैं? गुंजन, आर यू देयर? हेलो, पर वो रहती है सर। हाँ जी, शायद हमारी बात नहीं उन तक पहुंच रही है, राइट। ऑनलाइन क्लास इज लाइक दिस ओनली। ये ऑनलाइन रिफ्रेशर्स का फायदा है कोई? नहीं सर, इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं है सर। नहीं है तो फिर मैडम आप आ गए, अब फिर इसको ऑफलाइन मोड में करवाइए ना, तब तो हमें भी कुछ थोड़ा ठीक सा लगे भी। यस, वी आर एबल टू डू जस्टिस। लोगों ने एक्चुअली पता है क्या है सर, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कभी भी मैच नहीं कर सकते, है ना जी। टीचर हमेशा एथिक्स की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, प्रोफेशनलिज्म की बात करेगा, और गवर्नमेंट को चाहिए नंबर। अब वो कॉस्ट एफिशिएंसी का नंबर घटाना है और नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स इंक्रीज करनी है, और हम कहते हैं चाहे 20 लोगों को ट्रेनिंग दो, पर वैसी दो जैसी होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग का मैंडेट होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ होनी चाहिए। तो वो क्लैश करता है सर। इनको बड़ा स्वाद आ गया पैसे बचाने में। हाँ, ये तो बिल्कुल ही बहुत ही आसान हो गया ना भाई, ना तो रिस्पोंडेंट्स को छुट्टी की जरूरत, ना वहां से आने के लिए कोई टीए देने की जरूरत, तो कुछ भी मतलब उसे नहीं है। It's a very good cost cutting efforts, और the only thing is sir कि online mode के ऊपर भी ट्रेनिंग हम करवा दें, पर at least there should be supportive infrastructure and the number of participants should be reduced to only 20 in the online mode. और मैडम ऑनलाइन मोड पे क्या हुआ कि अभी ये जो कॉलेज है ना जो दिल्ली बेस्ड, वो तो सर उसने तो बांटे हैं जो सर्टिफिकेट सर, वी नो। हाँ जी, उसने क्या किया कि अभी ऑनलाइन ये सारी करवा दी ट्रेनिंग्स, और मैं स्टॉप करूं, चलो बहुत होगी बातें अब, राइट। स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन्स, राइट, यू शुड कम इन द ऑफलाइन मोड। तो उसने क्या किया जी कि टेस्ट रखा। अब सबने क्लास तो ऑनलाइन अटेंड करी थी जैसे हमारे अभी कर रहे हैं, राइट। नाम लो तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अपना म्यूट किया, कैमरा ऑफ किया, पिल्लो के नीचे रखा फोन, चल छुट्टी, राइट। तो उसके बाद एआई बेस्ड उसने फिर, अब आप इवैल्यूएशन तो करते ही हो, अब वो टेस्ट रख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। अब सबने सोचा कि ऑनलाइन क्लास की तरह की आ जाएगी और चलो जैसे बच्चे करते हैं वैसे ही हम भी कर देंगे, राइट। बट उसमें यूएमसीयां बन गई। उसमें यूएमसीयां बन गई। अब टीचर्स की यूएमसी बन जाए रिफ्रेशर कोर्स में, तो ये तो देखो कुछ बात जचती नहीं है, नहीं क्यों सुभाष जी? इतना तो एनटीए भी नहीं करता। हाँ जी, इतना तो एनटीए भी नहीं कर रहा, राइट। बट ये हो चुका है, ये हमारे साथियों के साथ ही हो चुका है, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से जाके किया कि नहीं इसको वी शुड से गिव देम अनदर चांस एंड ऑल दैट, राइट। तो तब जाके वो पास हुए। बट यस, दिस इज आने वाले समय में ये सब हो जाएगा। असेसमेंट तो इट विल गो ऑनलाइन, चाहे वो एचआरडीसी के ट्रेनिंग प्रोग्राम हो और चाहे कॉलेजेस हो हमारे, it will be definitely all assessments are going to be online very soon। मेरे को तो लगता है देखिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है
हो सकता है मैं गलत हूँ। एक चीज फैक्ट है कि हम चाहे जितना मर्जी ऑनलाइन से भागें, ऑनलाइन इज हियर टू स्टे, हाँ जी, बट नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू मेक इट ब्लेंडेड, राइट? हाँ जी, blended is like a mixture of online and offline components, and then increasing the efficiency of the say learning objectives which are to be achieved. तो हमें इस तरफ तो देखिए हमें सोचना ही पड़ेगा, चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जी, कि हाउ वी कैन क्रिएट ए मिक्सचर ऑफ दिस। और इसका हमें फायदा भी है। फायदा ये है कि वी आर एबल टू say switch between the online and offline modes, and we are able to say give a more enriching experience to the learners, right? We are able to give a more enriching experience to the learners. तो इसका एक फायदा भी है। अब इसकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए बजाय के टोटली ऑनलाइन करवाने के। I think so now HRDCs should start working on say how blended modules can be developed for each of the subjects, right? This is what I have proposed, sir. This is what I proposed to the chairman UGC during a meeting. And I said that the HRDCs should be given so much support by the UGC in terms of the softwares, in terms of the funding and the grant that they are giving to equip to the latest gadgets and to the latest software, so that we are able to train the teachers in AI, machine learning, virtual platform, 3D animations and all those things. क्योंकि यही फ्यूचर है सर, इट होल्ड्स द फ्यूचर। तो हमें ये सारी चीजें ये लोग देखिए, जब हमने अपना HRDC एस्टेब्लिश किया था 2009 में, तब हमारे कंप्यूटर परचेज हुए थे। उसके बाद कोई अपग्रेडेशन की कोई ग्रांट नहीं है और हमारे पास और कोई सोर्स तो है नहीं। 1000 रुपीज और 500 रुपीज ऑफ रजिस्ट्रेशन डज नॉट गिव अस सफिशिएंट वैल्यू कि हम इससे अपने पूरे HRDC को चला सके। पर आने वाले समय के अंदर मैं आपको एक बात और यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि ये कितनी जल्दी आती है इम्प्लीमेंटेशन पे, पर ऑल दीज ट्रेनिंग्स विल बी हाईली चार्जेबल। यस, ये हाईली चार्जेबल हो जाएंगी फॉर द टीचर्स। देयर विल बी नो फ्री लोडर्स, ये होगा ही नहीं कोई। और इनको हो सकता है कंपलसरी कर दिया जाए या इनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे ये करने के लिए कि जब तक ये सीखेंगे नहीं तब तक ये चल नहीं पाएंगे, और जब तक ये सीखेंगे नहीं इनकी प्रमोशंस नहीं होंगी टीचर्स की, और सीखना कंपलसरी हो जाएगा। और हमारे लिए जब ये ग्रांट्स बंद हो जाएंगी तो, और जब हम अपने खुद की इन्वेस्टमेंट लगाएंगे तो वी विल मेक इट चार्जेबल लाइक IIMs। 1 लाख रुपए दीजिए, 50,000 रुपए दीजिए एंड लर्न दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। अभी फ्री है, कोई वैल्यू नहीं है। अब जब ये चार्जेबल हो जाएगी तब इनको 1-1 लाख रुपया भी खर्च करके ये सीखना पड़ जाया करेगा। पर ये बहुत जल्दी आ जाएगा। ये मैडम ये जल्दी आएगा और उसके साथ साथ HRDC को कंपटीशन भी मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल मिलने वाला है सर, एंड आई एम हैप्पी विद द कंपटीशन सर। एटलीस्ट देयर विल बी, हम जो आजकल बात कर रहे हैं, और आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो सर लीडर है इसके अंदर। आपने लर्निंग बेस्ड आउटकम प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। CBCS भी आपने अभी बना लिया है अपनी यूनिवर्सिटी का, तो हरियाणा में किसी ने भी नहीं काम किया जो आप लोग काम कर रहे हैं। HRDCs बहुत कैपेबल हैं। द ओनली थिंग इज दे आर सप्रेस्ड इन एवरी डिपार्टमेंट, क्योंकि ना तो रिसोर्सेज दिए जाते हैं, ना बिल्डिंग दी जाती है, ना उसको कोई तवज्जो दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको बहुत सप्रेस कर दिया गया है फ्रॉम एवरीवेयर, वेदर इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द यूनिवर्सिटीज इटसेल्फ। इसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है कि सर्टिफिकेट ले जाओ। पर जब कल को इसके ऊपर आप कंपटीशन देंगे तो अपने आप ये सरवाइव कर जाएंगे सर। कंपटीशन आपको मिलेगा कोर्सेरा से, कंपटीशन मिलेगा अन अकेडमी से, राइट? यस। और फिर उसके साथ मैच करना पड़ेगा। फिर इस तरह के जेनरिक लेक्चर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। थके मांदे मोड में सुनना और सुनाना दोनों बंद हो जाएगा। राइट? हाँ सर बिल्कुल। और इन लोगों की भी सर, आज भी हम लोगों के पास 1-1 पर्सन की अटेंडेंस रहती है, किसने कब लॉग इन किया, कब लॉग आउट किया, कब दोबारा जुड़े, कब दोबारा चले गए। और ये वही वाली बात है सर कि वो टीचर्स हैं तो उन्होंने जैसे रिक्वेस्ट किया कि टीचर्स को इस तरह से UMC तो मत बांधो, क्या इमेज रह जाएगी बच्चों के आगे। तो ये इन लोगों का भी, बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स, तो हम इन सारी चीजों को मान लेते हैं। इस ग्रुप में भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो 2 दिन से जुड़े ही नहीं है। अब मेरे को पता है मेरे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है क्योंकि मैं उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं करने जा रही हूँ। तो मतलब ये झगड़े इस तरह से चलते हैं। पर ये जब ऑनलाइन सारी चीजें, इट विल बी ट्रांसपेरेंट ऑन द सरफेस। ई गवर्नेंस की जो हम बात कर रहे हैं या डिजिटल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएंगी।
आप किसी को ना तो प्रेस कर सकेंगे, ना सिफारिशें लगा सकेंगे, ना हम मानने लायक रह जाएंगे। बस ये ऑनलाइन चलाने वाला काम हो जाएगा, आपका एसएमएस आ जाएगा। वेबसाइट में पढ़िए, हम कुछ नहीं कर सकते। करवा लो माँ, ठीक करवा लो, हम दे देंगे। तो ये मुद्दे शुरू हो जाएंगे सर फिर। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं सर, और ये धीरे धीरे आ जाएगा, कितना ही हम नकार लें इन चीजों को। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी। तो बड़े रिसेप्टिव ऑडियंस है मैडम इन दिस कोर्स। आई फाउंड people responding and people say asking questions and all that. This is good, right? This is really good. And I am sure that, you know, by the time you finish your course, you will, I don't say you will take home the skills of doing research, but you will definitely take home the ideas for doing research, right? Skills so you can easily learn nowadays, that's not a big deal. But then ideas, getting the ideas. अभी जो आपने virtual life cycle का idea मुझे दिया है, right? See, I'm going to read more on this. Probably, you know, you do not know which cue or which one word of any of the resource persons initiated some thoughts in your mind, and you were able to come up with some new good publication or some new output. But yes, these discussions are really important. तो बहुत अच्छा लगा मैडम आपने बुलाया and say this wonderful audience, right? It has been really mutually rewarding. मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर एक रिफ्रेशर कोर्स, चाहे मैं अटेंड कर रहा हूँ एज पार्टिसिपेंट और चाहे मैं अटेंड कर रहा हूँ एज अ स्पीकर, एक वर्ड तो सीख के आऊँ कुछ नया, राइट? एक वर्ड नया सीख के आऊँ, एंड यूजुअली इट हैज हैपेंड दैट आई हैव लर्नड वन वर्ड, राइट? एंड दैट वन वर्ड हैज बीन रियली वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड यूजफुल. तो आपके यहाँ पे एक देहरादून के स्पीकर थे, देहरादून के पार्टिसिपेंट थे, क्या नाम है उनका, दून यूनिवर्सिटी वाला, राइट? तो इस तरह से, यू नो, देयर आर फ्यू पीपल, यू नो, फ्रॉम वेयर वी पिक्ड अप थिंग्स, एंड दोस थिंग्स रियली हेल्प टू शेप योर आइडियाज एज वेल फॉर योर ओन रिसर्च. तो चलिए, ग्रेट, राइट? नाइस टॉकिंग, नाइस मीटिंग यू ऑल. सुधांशु जोशी. हाँ, yes, Sudhanshu Joshi. Subhash ji has been very interactive. Chitra has been awesome, right? So we have had very good, say, discussions and deliberations, and I'm sure that you people will be benefited out of this whole exercise, right? We are also very much thankful to you, sir. Though it was a very tight-packed schedule for today of yours, but still you managed somehow on being with us in this to interact with our participants, teacher participants. Chitra is, I think, is affiliated to your university, sir. Her institution is affiliated to KU. Yes, ma'am, we are affiliated to KU only. She is from Panchkula, sir. Right. आपके वहीं पर ही ये बताया इन्होंने, हाँ जी, right. तो और हम सभी के बिहाफ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि आप जुड़े, इतना समय निकाला, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक था वो रहा, क्योंकि बेसिक तो हमारी रिसर्च यहीं से शुरू होती है. वंस वी स्टार्ट विद ऑल दीज थिंग्स, देन इट इज वेरी इजी टू पिक अप. जी, I'll send you the PPT. You please share it with the participants. ठीक है जी? पूरी दिखा नहीं पाए आपको, बट मैं तो ये रिसोर्सेज ओपनली शेयर करता हूँ मैं. So I'll send you the PPT. You please share it, right? जी बिल्कुल सर, I will share with each and every one of them. So thank you so very much, sir, and hope to see you very soon. And hoping that we will be conducting few offline programs as well. चलिए, ग्रेट, दैट इज ग्रेट. और मूक वाला प्रोग्राम जिसमें हम इन्हें एआई और ये सब सिखाने की बात कर रहे हैं, वो तो हम ऑफलाइन ही करने वाले हैं. चलिए, वो मैं भी करूंगा अटेंड. चलिए. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. श्योर.